Good morning, students. How are you? Hope you are staying safe at your home. So, in the previous video session, we have discussed about the barter system and its limitations. So, in today's video session, we will discuss about the various forms of money. So, basically, there are four forms of money, that is fiat money, second one is fiduciary money, third one is full-bodied money, and fourth one is credit money. So let's start with the first form of money, that is fiat money. Fiat money is that money which is issued by some central authority. Fiat money is that money which is issued by some central authority. For example, that is currency notes which are being issued by the Reserve Bank of India or the Government of India. So that we call it as a fiat money. Paper notes, coins, all are the kind of a fiat money because they are being issued by some central authority, and that central authority can be either a central government or either we can say that Reserve Bank of India, because rupee 1 note and all the coins are being issued by the Government of India, by Ministry of Finance, and all those currency notes except rupees 1, that is 2 rupee note, 5 rupee note, 10 rupee note, 20 rupee note, 50 rupee note, 100 rupee note, 200 rupee, 500 and 2000 rupee, all are being issued by the Reserve Bank of India. So all those money which are being issued by some central authority is what we call it as a fiat money. Then comes fiduciary money. Fiduciary money is that money which is being accepted as a medium of exchange just because of the trust between payer and pay. Fiduciary money is that money which is accepted as a medium of exchange just because of the trust between payer and pay. For example, चेक. हम एक दूसरे को चेक तब ही देते हैं या सामने वाला बंदा चेक तभी एक्सेप्ट करता है when he is having trust on that particular person. The payee will accept the check only when he is having trust on payer कि इसका चेक बाउंस नहीं होएगा. ठीक है, अगर वो चेक उसको लगता है कि हाँ जी ये बंदा जो है वो डिफॉल्टर है, इसका चेक बाउंस हो सकता है, तो वो उसको कह सकता है कि मैंने चेक के थ्रू पैसा नहीं लेना, मैंने पैसा सिर्फ और सिर्फ कैश के फॉर्म में लेना है. तो fiduciary money क्या है? Fiduciary money is that money which is accepted as a medium of exchange just because of trust between payer and payee. For example, checks. Next comes full-bodied money. Full-bodied money is that money whose commodity value is equals to the we can say that money value, whose commodity value is equals to the money value engraved on it. यानी कि in the ancient times when silver or gold coins was in circulation, यानी कि अगर वो 5 रुपए का चांदी का सिक्का है तो उस पे 5 रुपए की चांदी होएगी. फुल बॉडीड मनी यानी कि जिसकी क्रेडिट मनी दैट इज जो कमोडिटी वैल्यू है वो किसके इक्वल होएगी? मनी वैल्यू इनग्रेव्ड ऑन इट. नेक्स्ट कम्स क्रेडिट मनी. क्रेडिट मनी क्या है? क्रेडिट मनी इज दैट मनी whose commodity value is less than money value. यानी कि whose that is commodity value is less than the money value. अगर commodity value ज्यादा होएगी money value से तो लोग क्या है उसको मार्केट में बेचना शुरू कर देंगे मेटल बना के. ठीक है, लाइक कॉइन्स का अगर 1 रुपए पे ऊपर 2 रुपए का मेटल लगाने तो लोग क्या करेंगे उस मेटल को पिघला के 2 रुपए में बेचना शुरू कर देंगे. तो क्रेडिट मनी कौन सी मनी है जिसपे क्या है? वी कैन से दैट whose commodity value is less than the money value engraved on it. That what we call it as a credit money. Now let's discuss the concept of money supply. Let's discuss the concept of money supply. So money supply refers to the stock of money held with the people of our country.
तो मनी सप्लाई रेफर्स टू दैट मनी विच इज हेल्ड विद द जनरल पब्लिक ऑफ आवर कंट्री, यानी कि जो हमारे देश की जनता है उसके पास जो पैसा पड़ा है उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ मनी सप्लाई. मनी सप्लाई डज नॉट अकाउंट, मनी सप्लाई डज नॉट अकाउंट द मनी हेल्ड विद द बैंकिंग सिस्टम ऑफ आवर कंट्री एंड द मनी हेल्ड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मनी सप्लाई में हम सिर्फ जो हमारी जनता का पैसा है वही इंक्लूड करेंगे. तो मनी सप्लाई रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी held with the general public, whether it is in the form of currency notes, whether it is in the form of coins, whether it is in the form of demand deposits. Money supply does not include the stock of money held with the banking system of our country and the stock of money held with that is government of India, because these two are the suppliers of the money. So in money supply we do not include that money which is held with the suppliers of money. मनी सप्लाई में हम वो पैसा इंक्लूड नहीं करते हैं जो मनी सप्लायर्स के पास होता है. हम मनी सप्लाई में वही पैसा इंक्लूड करते हैं जो हमारी जनता का पैसा है. So basically there are 4 measurements of money supply: M1, M2, M3 and M4. But in your syllabus only there is one measure, that is M1 measurement. So according to M1 measurement of money supply, it includes C plus DD plus OD. C stands for currency, DD stands for demand deposits and OD stands for other deposits. तो C stands for currency, यानी कि जो लोगों के पास करेंसी यानी कि कॉइन्स में, पेपर नोट्स में पैसा पड़ा है. डिमांड डिपॉजिट्स, DD डिमांड डिपॉजिट्स, यानी कि जो पैसा लोगों का बैंक में पड़ा है, सेव करा हुआ. नेक्स्ट OD अदर डिपॉजिट्स. अदर डिपॉजिट्स में क्या आ जाता है, कोई नाबार्ड का पैसा RBI के पास पड़ा है, किसी फॉरेन गवर्नमेंट का या फॉरेन सेंट्रल बैंक का पैसा RBI के पास पड़ा है, या फिर किसी फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा जैसे कि IMF और वर्ल्ड बैंक का पैसा किसके पास पड़ा है, RBI के पास पड़ा है, तो वो किस में आ जाएगा, अदर डिपॉजिट्स. तो अकॉर्डिंग टू M1 मेजरमेंट वी इंक्लूड्स द करेंसी हेल्ड विद द पीपल, द डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड विद द पीपल, एंड अदर डिपॉजिट्स इंक्लूड्स द डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ NABARD विद RBI, द डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड फॉरेन सेंट्रल गवर्नमेंट्स विद RBI, and the money held with the RBI of IMF or World Bank. तो वो पैसा किसमें आ जाएगा, other deposits. So who supplies money? Who supplies money? So generally there are basically 3 institutions who supplies the money: RBI, Government of India and commercial banks. जो RBI और Government of India है ये तो फिजिकल फॉर्म में करेंसी इशू करते हैं, क्योंकि जितने भी कॉइन्स हैं that are being issued by the government of India, and rupee 1 is issued by the government of India. And the other currency notes which are left, other denomination which are left, that is being issued by the Reserve Bank of India. Now third one comes commercial banks. So commercial banks creates the money through, we can say that, loan, by creating credit. वो क्रेडिट क्रिएट कर करके जो पैसा क्रिएट करते हैं जिसको हम बैंक मनी बोलते हैं, वो कौन क्रिएट करता है, कमर्शियल बैंक. नाउ दिस प्रोसेस दैट हाउ कमर्शियल बैंक्स क्रिएट द क्रेडिट, वी विल डू इट इनटू द नेक्स्ट चैप्टर इन वेरी डीप. सो बेसिकली हु सप्लाइज मनी, देयर आर 3 institutions supplies the money: RBI, Government of India and commercial banks. So by this we are concluding with our chapter money. So if you have any query, please note it down on your notebook. I will sort it in your tomorrow's Google Meet session. Thanks and have a nice day.